हाय एवरीवन, दिस इज खालिद जावेद, होप यू डूइंग वेल। सो आज के जो हमारी जो वीडियो है ये बेसिकली डिप्लोमा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से related है, जो कि SBTE से रजिस्टर्ड है, सिंध बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन से रजिस्टर्ड है। और इसके जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता हर वीडियो में। सो आज पहले टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा। ये बेसिकली MCQs होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं टेस्ट के। सो यहाँ पे सबसे पहले आपने अगर इसको अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ example@mail.com। फुल नेम डाल दें यहाँ पे ABC एंड आंसर यहाँ पे आप डाल दें। मोबाइल नंबर में आप डाल दें ABCD। ओके, तो ये हो गया है। उसके बाद हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लीड्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ जावा। सो यहाँ पर देखें 1 पॉइंट है और फिर नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है और ठीक है। ओके, सो हम आगे चलते हैं। इस तरह से ये है। अच्छा, अगर आप चाहें कि आप आगे जा सकें तो आप नहीं जा सकते जब तक आप एक पेज कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आपको मतलब अगर आगे जाना है या फिर नेक्स्ट MCQ अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए पहले सबसे पहले आपको जो MCQs हैं जो आपके फ्रंट पेज के वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लीड्स टू द प्रोबेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ जावा। सो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय JVM which is Java virtual machine। देन हमारे पास एक सवाल है which of the following is not the feature of Java, use of pointers। ओके, देन हमारे पास आ जाता है ये एक सोर्स कोड। सही, अभी अगर मैं सोर्स कोड तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको उसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज यहाँ से कॉपी नहीं हो सकता। तो इसका जो हमारे पास जो आंसर है इसका वो है, इसका जो आउटपुट बेसिकली जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आउटपुट इसका जो हमारे पास आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। वो क्या है? स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक्स, कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। क्यों? बिकॉज जो स्टैटिक ब्लॉक होता है वो कभी भी एग्जीक्यूट हो सकता है अगर वो लोडेड है JVM जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू। देन हमारे पास एक नया सोर्स कोड आ जाता है। सो इसमें जो हमारे पास है जो इसका आउटपुट होगा बेसिकली इसका जो हमारे पास आउटपुट होगा वो होगा डी। क्यों? क्योंकि ये 60, 30, 0, 20 एंड 0। इसमें मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, इसमें मैंने क्यों किया? क्योंकि जो वैल्यूज है वेरिएबल की वो 10 है और 60 है सिमिलरली, और जो दूसरी वैल्यूज है वो 5 है 30, लेकिन आउटपुट जो वैल्यूज का वो 60 और 30 के हिसाब से होगा, ए और बी ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं। देन हमारे पास जो अगला MCQ है वो है द यूज 0021 आर्टिकल रेफर टू एज अ, तो इसमें हम कर देते हैं यूनिकोड एस्केप सीक्वेंस। नंबर 6 हमारे पास जो है आ जाता है डैश इज यूज्ड टू फाइंड एंड एफएक्स एंड दिस इज फाइंड एंड फिक्स बग्स इन जावा प्रोग्राम्स। सो ये मेरे हिसाब से इसका होगा आंसर ए। ओके, JVM जावा वर्चुअल मशीन। देन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ चार। सो चार ही होता है, चार बेसिकली कैरेक्टर होता है। सो यहाँ हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिडेशन ऑफ चार। ओके, अच्छा इसका आंसर JVM नहीं JDB है, लेकिन मैंने इसका नहीं लगाया बिकॉज मुझे एक चीज और दिखानी कि अगर आंसर गलत हो जाए तो क्या होता है। तो हम आगे चलते हैं। वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ चार, तो इसका जो हमारा आंसर होगा ए होगा, ऑप्शन ए। देन हमारे पास है व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द हैश कोड मेथड इन ऑब्जेक्ट क्लास। सो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए। 7 का ए है। 8 का होगा हमारे पास बी, इंटीजर। देन हमारे पास आता है नंबर 9 विच द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग वैलिड दिस इज अ वैलिड लॉन्ग लिटरल। सो ये हो जाएगा हमारे पास डी। व्हाट डज एक्सप्रेशन फ्लोट a = 35 डिवाइड बाय 0 रिटर्न। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा
डी रन टाइम एक्सेप्शन। तो ये हो गया। और नेक्स्ट चलते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है इसमें। तो नंबर 11 पे आ जाते हैं। इसमें है evaluate the following Java expression if x equals to 3, y equals to 5 and z equals to 10। सो यहाँ पे एक हमें स्टेटमेंट दी हुई है, यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट होती है यहाँ तक। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो 24 होगा। ए विच ऑफ द फॉलोइंग विच विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो इसका जो मेरे पास मेरे ख्याल में जिसका आउटपुट होगा वो होगा 8 टाइम्स स्टार एंड 7 टाइम्स प्लस 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 प्लस। Which of the following tool is used to generate API documentation in HTML format? So ये उसका आंसर जो होगा वो होगा Java document tool. Which of the following creates a list of 3 visible items and multiple selections abled? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा new list 3 2। Which of the following loop declaration is not valid? मतलब कौन सी loop declaration सही नहीं है हमारे पास, बिकॉज ये सारे loops बने हुए हैं। तो जो इसमें सही नहीं होगी वो होगा ऑप्शन ए। Which method of the class is used to determine name of a class represented by the class as a string? तो ये होगा get name. In which process a local variable has the same name as one of the instance variable? So ये होगा B variable shadowing. Then हमारे पास आता है 18, उसमें होगा which of the following is true about the anonymous in a class? तो ये हो जाएगा D java.io package. बेसिकली पैकेजेस का काफी ज्यादा काम होता है जावा में, तो इसलिए java.io package. What do you mean by the nameless objects? So ये हो जाएगा D. Then next. Oh, waiting here. इससे होगा java.util package. Next. फिर हमारे पास आ जाता है इंटरफेरेंस। हमारे पास आ जाता है an interface with no fields or method is known as a, so this will be marker interface. Which of the following is an immediate subclass of final class so this will be applet class. Which option is false about the final keyword? So final keyword, so this will be C. Which of these classes are direct subclasses of throwable class? Throwable class, this will be C. 25 पे आते हैं. What do you mean by the chained exceptions in Java? So this will be A. Which memory string is stored when we create a string using new operator? So this will be heap memory. Then हमारे पास आता है which is what is the use of intern method? So this will be it returns an existing string from memory. Which of the following marker is a marker interface? So the following is a marker interface, so this will be remote interface. Which of the following is reserved keyword in Java? Strict FP. Which keyword is used for accessing the feature of a package? Import D, export B, strict FP. So this will be strict FP. So this will be import, export, extend. So this will be
B. Import. In Java, jar stands for, so none, कोई भी नहीं है। नंबर 32 में अगर हम आए तो यहाँ पर हमसे पूछा है सोर्स कोड का, सो इसका जो आंसर है वो कंप्लीटेड है। Which of the following is false? So the false is option B. It is the optional jar file. What is the use of W in regs? So this will be used for what character? Which of the following? Which of the given method are methods of class object? This will be C. Notify all and wait. 36 हमारे पास है given that students in a class, how many reference variable and objects are created by the following code. So एक कोड दिया हुआ है, इससे हमें बताना है क्या क्रिएट होता है, तो इसका आंसर होगा A. तो हमारे पास आता है 37. Which of the following is a valid sentence to synchronize the hash map? So this will be C. M1 map M1. Then 38 में आता है given 38 मतलब given है, तो यहाँ पे source code है, तो the source code will be, I think search will be 10. Then which of the following is a mutable class in Java? So this will be java.lang.string builder. Option B. Then हमारे पास एक है ये आउटपुट का प्रोग्राम पूछा है, तो ये होगा ऑप्शन बी. मेथड इज नॉट डिफाइंड प्रॉपर्ली. सो ये हो गया. उससे नेक्स्ट what is mean by the classes and objects depend on each other? So this will be tight coupling. Cohesion B होगा हमारे पास. Cohesion loose coupling and none of the above. So this will be okay. This is done. Then 42 पे अगर हम आए तो 42 में हमें एक सोर्स कोड दिया हुआ है. सोर्स कोड जो दिया हुआ है इसका जो हमारे हिसाब से आंसर होगा वो होगा none of the above. ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं. Then हमारे पास आता है 42, 43. 43 में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो इनमें से रॉन्ग जो करेक्ट स्टेटमेंट जो होगी हमारे पास, जो करेक्ट सर्वर होगा डेटाबेस का, वो होगा सी. देन उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 44. देन हाउ मेनी थ्रेड्स आर कैन बी एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम? सो दैट विल बी मल्टीपल थ्रेड्स. कितने थ्रेड्स आते हैं? इफ 3 थ्रेड्स आर ट्राइंग टू शेयर अ सिंगल ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, व्हिच कंडीशन विल अराइज इन सिनेरियो? So this will be race condition. If a thread goes to sleep, so this will be it does not release any locks. Question number 47 आ जाता है हमारे पास. The following modifiers can be used for a variable so that it can be accessed by a thread. So this will be C, volatile. What is the result of the following program? What will be the result of the following program? So this will be D. In character stream IO, so single read write program or read write operation performs. So this will be answer A. What is the default encoding of an output stream writer? B, default encoding. So जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपने यहाँ पे इसको ऑन कर देना ताकि आपको कॉपी मिल जाए आपके रिस्पॉन्स की. सबमिट कर दें. ओके. सो मैंने एक या दो सवाल गलत किए थे जस्ट टू शो यू. सो देखते हैं. हाँ 3 सवाल गलत किए थे. सो गलत किया था इसमें, वो मैंने गलत इसलिए किए थे ताकि मैं बताऊं कि गलत करें तो फिर क्या होता है.
सो देखें, अगर आप सही करेंगे तो फीडबैक में आपका सजेगा गुड, लेकिन अगर कोई सवाल आप गलत कर देते हैं, जैसे कि ये, तो मैंने गलत किया था ये वाला सवाल, तो इसका आंसर है GDP डी, करेक्ट आंसर। उसको पूरा आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी सही है। देन ये what does the expression float a equal to 35 derivative tensor, this will be infinity, not this one. So इसकी भी पूरी आपको एक फीडबैक में एप्लीकेशन पूरी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो मिल जाएगी। इसमें सारे सही हैं, इसमें एक गलत है और वो है ये वाला, what do you mean by chained exceptions in Java? So इसका आंसर बी है, ठीक है, और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, बाकी तो सारे सही हैं, ठीक है। So okay guys, thank you so much for watching the video. If you like the video, so please share, subscribe Omni Academy. Thank you so much.